Good evening, viewers. You're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. Two big developments that has taken place with the Aam Aadmi Party bang in the centre. Earlier on, news broke out with Arvind Kejriwal's tweet suggesting that his MLA in Surat has been kidnapped, only for the MLA to resurface and say, no, I haven't been kidnapped at all. We're going to get you that story. The other big story which took place was of the MCD elections in the national capital, where one MLA has now been indicted and accused of trying to sell MCD tickets. We're going to bring in both the stories right here, but take a look at an allegation now made by the Aam Aadmi Party suggesting that one of its MLAs, or one of its candidates, I beg your pardon, in Surat, who had filed his nomination, firstly was forced to take back his nomination and then was kidnapped, only to resurface and say, I wasn't kidnapped, I'm thinking about it. High drama in battleground Gujarat. The Aam Aadmi Party's Surat East candidate Kanchan Jariwala allegedly goes missing for hours, prompting his party to level charges of kidnapping against the BJP. भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है. Moments after Aam Aadmi Party made its big claim, Jariwala surfaced at the Election Commission office in Ahmedabad and withdrew his candidature amid heavy police deployment. Aam Aadmi Party leaders tweeted a video showing Jariwala being taken by police officials to claim the BJP and the state police had forced their candidate to take back his nomination. जो आदमी अभी तक लड़ रहा था, अचानक वो गायब हो जाता है और फिर केवल नॉमिनेशन वापस लेकर फिर से गायब हो जाता है. तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस क्वेश्चन में है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है. तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इसकी इंक्वायरी कराइए और इस पर्टिकुलर सीट पे आप इलेक्शन को होल्ड करिए. थोड़े दिन बाद जब सारी चीजें सामने आ जाएं, उसके बाद इलेक्शन. Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia staged the dharna in the national capital outside the Election Commission's office. A team of Aam Aadmi Party leaders led by Sisodia submitted a petition to the EC urging it to put the elections in Surat East on hold. इतना हुआ नहीं है. मैं मेरा फैमिली के साथ, मेरा सगा संबंधी के साथ मैं मानसिक तनाव में आ गया था, इसलिए मैंने कुर्सी छोड़ दिया ना. मैं मेरे मानसिक तनाव में कब से हैं आप? मानसिक तनाव कब से हैं? मैं 3 दिन से मानसिक तनाव में चल रहा था. अच्छा, और उसी के चलते आज आपने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया? जी जी जी. If the EC does not pull off elections, Aam Aadmi Party may have no candidate in Surat East now. The withdrawal of nomination by Jariwala has left the party deeply embarrassed. With Gopi Manyar in Ahmedabad, Pankaj Upadhyay in Surat and Amit Bharadwaj in Delhi, Bureau Report, India Today. So the Aam Aadmi Party candidate has now taken back his nomination in Surat. He says that the BJP never abducted him or kidnapped him. He's taken back the nomination of his own volition. In the next couple of days, he will decide what his next course of action is. However, the Aam Aadmi Party continues to suggest that he has been bullied into making this decision. Listen in to the Aam Aadmi Party candidate. On the other hand, also Manish Sisodia under fire. Manish Sisodia is managing the MCD campaign back in Delhi while Arvind Kejriwal is campaigning in Gujarat. Manish Sisodia under fire for one of Delhi's MLAs allegedly taking a bribe for a ticket has come into play. But Manish Sisodia and Delhi defending what's happened in Surat. Listen in. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दिए, स्टेटमेंट दे दिए, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि आप किडनैप हो चुके हैं. बताइए. नहीं, मैं सर किडनैप हुआ नहीं है. मैं मेरा फैमिली के साथ, मेरा सगा संबंधी के साथ मैं गया था. मैं मानसिक तनाव में आ गया था. रिलैक्स होने के लिए मेरे को कोई मेरे घर पे कोई परेशान करने नहीं आए थे. ना आपकी किडनैपिंग हुई, ना रातों रात सस्पिशियस तरीके से आप कहीं गए क्योंकि आपको कहीं अपने सगे संबंधियों के साथ जाना था. लेकिन फिर आपने अपना नॉमिनेशन वापस क्यों ले लिया? बस मेरा नॉमिनेशन वापस लेने का कारण है तो मेरी संगठन टीम मेरे से बहुत विरोध कर रही थी. बोला आपको इलेक्शन में हम आपको साथ सापर नहीं देंगे. मैं मानसिक तनाव में आ गया था, इसलिए मैंने कुर्सी छोड़ दिया ना.
मैं मेरे मानसिक तनाव में कब आया से था। हैं आप मानसिक तनाव, कब से हैं? मैं 3 दिन से मानसिक तनाव में चल रहा था। आज के दिन आपकी क्या स्थिति, आपका क्या स्टेटस है? आप आम आदमी पार्टी के साथ ही हैं, उसके कार्यकर्ता ही हैं, या बदलाव आ गया है? नहीं नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के साथ भी हूँ, भाजपा के साथ भी हूँ। मैं अपना स्टैंड क्लियर करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता ना सर। मैं इधर भी है, उधर भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे विस्तार में जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो हिसाब से मैं भी साथ में रहता हूँ ना। जो जैसा मेरा स्टैंड 4-5 दिन के बाद क्लियर करूंगा। क्या आपने शिकायत में अपनी बात कही? हमने चुनाव आयोग के संज्ञान में इस पूरे केस के फैक्ट्स लाए कि हमारे सूरत ईस्ट से जो हमारे प्रत्याशी थे कंचन जी, उन्होंने कल अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कल वो स्क्रूटनी में गए। स्क्रूटनी में एकदम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पूरा विरोध करते हुए बीजेपी वाले कह रहे थे नॉमिनेशन वापस लो, इनका नॉमिनेशन कैंसिल करो। पूरी लड़ाई लड़ी कि नहीं, मैं सही कैंडिडेट हूं, मैं हूं, और मतलब जो जज्बा उन्होंने दिखाया। लेकिन अचानक जब आरओ के दफ्तर से वो बाहर निकले तो बीजेपी वालों ने अपनी गाड़ी में बिठा के उनको ले गए, और उसके बाद से वो लगातार गायब थे। अब वहां से हम 24 घंटे से उनको ढूंढ रहे थे, वो कहाँ हैं। उनके परिवार के लोगों को भी कुछ नहीं पता चल रहा था, परिवार के लोगों का भी पता नहीं चल रहा था कहाँ हैं। तो अचानक हमें लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो सुबह से हमने इसको पूरी तरह से पुश करना शुरू किया गुजरात में इलेक्शन कमीशन के साथ में। दोपहर तक आते आते देखा कि अचानक बहुत सारे पुलिस वाले कंचन जी को लेके आते हैं, आरओ के दफ्तर में बिठाते हैं, वहां से आरओ से उनका नॉमिनेशन वापस होता है, और उसके बाद फिर से बीजेपी वाले धक्का देते हुए कंचन जी को अपनी कार में बिठा के ले जाते हैं। सर, दोपहर में आपको ये जानकारी मिल गई थी कि नामांकन वापस ले लिया है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने? तो दोपहर को जब ये हुआ तो हमें लगा ये तो गड़बड़ है, और अभी भी वो गायब है। तो उसके आपसे संपर्क नहीं हो पाया, आपसे कोई बातचीत नहीं हो पाई या पार्टी के गुजरात के नेताओं से? किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, परिवार का भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद से हम सबकी चिंता बढ़ी, और इसलिए हमने इमरजेंसी में इलेक्शन कमीशन का दरवाजे खटखटाया कि साहब, एक तो कैंडिडेट गायब है, उसकी जान पे कुछ खतरा है। दूसरा, पूरी इलेक्शन प्रोसेस में अगर बीजेपी के गुंडे धमका धमका के नॉमिनेशन वापस कराएंगे और पुलिस इस तरह से उनके पूरे सहयोग खड़ी होगी, किडनैपिंग का उन पर आरोप लगाने की जगह पुलिस उनको सहयोग कर रही है, तो ऐसे में फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह गया। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से हार रही है वहां पे, और सारे हथकंडे उनके फेल हो गए, वो बुरी तरह से हार ही रहे हैं। तो वैसे में अब वो कैंडिडेट्स को किडनैप कर करके नॉमिनेशन वापस करा के चुनाव जीतना चाहते हैं। I want to cut across to my colleague Pankaj Upadhyay, who's joining us live with the very latest from Surat. Pankaj, what's the real story? What really happened? Because, we saw him filing his nominations. Then there were indications that he's being pressured to take back his nomination. Then he disappears only to take it back. What's going on? What's the true picture? Well, the story is far from over. It is very obvious. And the candidate himself has said that he is going to clear his stand in the next 5 days. Interestingly, he has also said that all the doors are open to him. When I said, is there a possibility that you might join the Bharatiya Janata Party, he said that he is going to make his stand clear in the next 5 days, and that no doors are shut. As a politician, all the doors are open for him. So that says a lot at this point of time. He stated it very clearly that he was not kidnapped. I visited his house this evening. All his family members were present there, and they also maintained that there is no pressure on him. But Kanchan Jariwala says that he has been under a lot of mental pressure for the last 3 days. He says that there are certain people within the organization who've been building a lot of pressure on him. They do not want him to contest the elections, and that they were not supporting him. And this is what the story that he is giving. Also interestingly, Preeti, this evening when Aam Aadmi Party released the final list of all the 182 candidates, Kanchan Jariwala does feature in that list. There is a photograph of Kanchan Jariwala. His name is there from the Surat East constituency. But a lot of drama is taking place. We heard what Manish Sisodia is saying. He's saying that they have requested with their legal team to the RO that the elections to this particular constituency, that is Surat East, be delayed, and a decision could be taken later on. Bharatiya Janata Party, on the other hand, says that baseless allegations are being made by the Aam Aadmi Party, and there is absolutely no substance to it. We've heard the candidate, we've heard what the Aam Aadmi Party leaders are saying. Does the Aam Aadmi Party have a second candidate they can prop up?
Right now, the state president, that is Gopal Italia, is not saying a thing. They are saying they are focusing on this very issue. This evening, along with Raghav Chadda, they met the RO. They've given a written complaint saying that he was kidnapped and that at gunpoint he was asked to take back his nomination papers. So this story is still rolling. As I said, the real truth is going to come out when Kanchan Jariwala is going to make his stand clear, which he says that he is going to spell out in the next 5 days. And interestingly, as I said, he's clearly maintained that all doors are open for him. So it really remains to be seen what he is saying. Is he going to join some other party? Is he going to stay there? Because even the Aam Aadmi Party feels that they have a solid ground. And what should be read into this when the list clearly still names him as their AAP candidate from Surat East. So let's see how things play out, Pankaj, in the days to come. Thank you for joining us. We're going to continue to come back to you. My colleague Pankaj Upadhyay has been reporting out of Surat. A lot going on, dramatic theatrics to say the least, but it's not that it's not happening. In the MCD elections back here in Delhi, the Aam Aadmi Party finds itself bang in the middle for a cash for ticket case. How is that? Well, the ACB has now arrested the brother-in-law and the personal assistant of an MLA trying to sell MCD tickets. Here's more. चलो विधायक जी को बता देना कि दो काम कम है 33 लाख रुपए. A massive embarrassment for Aam Aadmi Party ahead of Municipal Corporation of Delhi polls. Delhi Police's anti-corruption branch arrested 3 men for allegedly selling Aam Aadmi Party tickets for upcoming civic polls in the capital at the behest of 2 sitting AAP MLAs. Model Town AAP MLA Akhilesh Pati Tripathi and Wazirpur AAP MLA Rajesh Gupta. Cops identified the arrested accused as AAP MLA Tripathi's brother-in-law Om Singh, the MLA's personal assistant Vishal Pandey and aide Prince Raghuvanshi. The complainant, identified as Gopal Khari, alleged he had paid bribes to the MLAs for MCD poll ticket from Aam Aadmi Party for his wife, but failed to obtain one. चलो विधायक जी को बता देना कि दो काम कम है 33 लाख रुपए. The complainant alleges that he had paid rupees 35 lakh to Model Town Aam Aadmi Party MLA Tripathi and rupees 20 lakh to Wazirpur Aam Aadmi Party MLA Rajesh Gupta. The complainant submitted audio and video recordings of the alleged bribery to the Delhi police. India Today can't vouch for its authenticity. हेलो. हाँ जी. हाँ भाई. हाँ जी बताइए ना. लिया है वो काउंट कर रहा है लड़का पैसे. नहीं भैया से भी बात हुई थी विधायक जी से मेरी. हाँ. अखिलेश भाई से. हाँ. चलो कोई नहीं, आप भैया को बोल देना सामान पहुंच गया विधायक जी को. मैं उधर बोल देता हूँ. मैं बेटा गड्डी वैसी काउंट कर ले कितनी है, वैसे नहीं करनी है. हेलो. हाँ भैया. हाँ. ओम. हाँ. भैया से बात करो. क्या नाम तेरा बेटा? प्रिंस. प्रिंस से बात कर. भैया 2 की गड्डी कम बता रहे हैं, 2,00,000 के दिए थे उन्होंने. ये काउंट कितने है बता दो. ये 33 है. कल करा देंगे. है भैया. अगर है ऐसा तो मैं कल तक दिखवा लेता हूँ ऐसे. चलो विधायक जी को बता देना कि दो काम कम है 33 लाख रुपए. Political storm erupted over the alleged cash for ticket row, with the BJP gunning for Chief Minister Arvind Kejriwal. This kind of allegations are not new for the Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party has been involved in many corruption scams. This is yet another cash for ticket scam. Instead of playing a victimhood card, they must take action on these MLAs. बड़ी उम्मीद लेकर आम आदमी पार्टी में आए होंगे कि मैं भी भ्रष्टाचार समाप्त करने में सहयोग करूंगा. तो उनसे अखिलेश त्रिपाठी के जब उनके दफ्तर में पहुंचे तो वहां पर बैठे ओम सिंह जी ने कहा कि इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा. तो ये बैड कैरेक्टर टाइप के बैड एक्टिविटीज करने वाले लोगों की पंचायत आम आदमी पार्टी बन गई है. However, Delhi Deputy Chief Minister Sisodia has said that the fact that the candidate didn't get the ticket despite paying bribe was proof that the Aam Aadmi Party was corruption free. ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है
कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए, कहीं किसी ने दूर दूर, लेकिन टिकट नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। The ACB probe into cash for ticket row will now involve the two accused Aam Aadmi Party MLAs. Bureau Report, India Today. So both issues, viewers, what happened in Surat and what's taken place right here in Delhi. What does it make of the reputation of the Aam Aadmi Party? Because it's now fighting two elections, the MCD elections in Delhi and also in Surat, where every time you hear the Delhi Chief Minister, he says कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ. Well, what went down in Delhi raises a question mark on that. And of course, we're also going to bring in Surat because the Aam Aadmi Party feels that the BJP is pulling out all the stops to make sure that the Aam Aadmi Party's campaign in Gujarat is sabotaged. Joining me this evening is Vijendra Gupta, MLA, Bharatiya Janata Party, and Ravi Srivastav, political analyst. Vijendra ji, मेरा पहला सवाल आपसे, एक तो one thing is very clear, विजेंद्र जी, जो सूरत में हुआ और जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में एक सवाल आता है कि अगर if Aam Aadmi Party continues to say that they are a clean, non-corrupt, कट्टर ईमानदार सरकार, then a question mark is raised. But the Aam Aadmi Party says, Vijendra Gupta, that it only goes on to say that money might have exchanged hands by some relatives, but that person never got the ticket. उसको तो टिकट मिला ही नहीं. देखिए, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि फनी स्टेटमेंट है आम आदमी पार्टी का कि किस तरह से बेईमानी को भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पैसा आ रहा है, गिने जा रहे हैं, पैसा मिल गया, पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और एक टिकट में थोड़ा हो रहा है। ये तो एक आप समझिए कि एक बात सामने आई है, पर ये तो हर जगह हुआ है। अब ये कहना कि इसको टिकट नहीं मिला या मिल गया, जिनको मिला है उनको क्या बिना पैसे के मिला है क्या? पूरा आम आदमी पार्टी का करप्शन का ये मॉडल सबके सामने आ गया है, जिसका नाम है कट्टर ईमानदार, लेकिन है ये कट्टर भ्रष्टाचार। अब इन्होंने कट्टर भ्रष्टाचार को कट्टर ईमानदार की डेफिनेशन दे दी और लोग उसको मान लें। पूरी मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं, पूरा जो इनका तौर तरीका है वो करप्शन से भरा हुआ है। इनके एमएलए पकड़े जा रहे हैं, इनके ऑफिस बेयर्स पकड़े जा रहे हैं, और ये लोग उनके खिलाफ, अच्छा ठीक है, इन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? वो कहते हैं कि टिकट नहीं मिला, तो पैसा लिया, पैसा वापस किया या दिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दोनों एमएलए को क्यों नहीं अभी तक इन्होंने पुलिस के हवाले किया? इनको क्यों नहीं पार्टी से निकाला? इनके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कोई डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी, आप हर करप्ट आदमी को प्रोटेक्ट करते और उस पर आप अपना एक प्रोटेक्शन कवर देकर उस पर फिर आर्गुमेंट देते। जी, ये बिल्कुल बेसलेस। जी, Ravi Srivastav, the fact is, unethical, the Aam Aadmi Party might try and say and suggest that this is, they have nothing to do with the MLA in particular, but this is the brother-in-law of the MLA, and correct me if I'm wrong, and the personal assistant of that MLA, and they've been caught on camera discussing money. Priti, nobody has denied that he was not a brother-in-law of the MLA. The fact is that ACB has already arrested the people, and the probe is on, and whosoever is found guilty will be punished. This is for sure. Aam Aadmi Party does not sell the tickets, and it's a fact which is obvious that the person, that lady Shobha Khari, who was desirous of buying this particular ticket, did not get a ticket. So during the election discourse, this kind of people crop up and they do this kind of dubious dealings and try to make some fast buck. But let them be punished. Nobody is defending that particular thing. And Manish Sisodia has clearly said it that let the ACB do the proper investigation and fix the people. But my question here is one: why ACB has only caught up those people on whom the charge of taking bribe is there? I think, in my knowledge, that the person who is giving the bribe is also equally culpable. That person also should be arrested.
There could be a conspiracy, there could be a dummy, there could be a person planted, there may be a deliberate purpose to malign Aam Aadmi Party. These are all my apprehensions, which I want to say. But at the same time, what are they doing in Gujarat, where they are rattled completely, that they are losing the ground altogether, and they are abducting the MLAs, and the man says that I am under mental stress for last 3 days. No, he was canvassing for Aam Aadmi Party for last 2-3 Mr. months. Srivastava, the Aam Aadmi Party candidate has come out and said nobody abducted me. No, it's a false thing, because he is missing since yesterday. It's election time. People are knocking the doors of the candidate every minute. It is not that he can disappear for 24 hours and 36 hours and then sends a video message that, look, I have withdrawn my candidature, and then 500 policemen are escorting him for that. Where is the need for policemen escorting? There should be supporters. And at the same time, why this person is still, when your reporter is interviewing him, he asked him, are you switching over the party? Are you not with AAP? He said, no, I am with AAP also, I am with BJP also. I don't know what kind of mental status he has got and what kind that of... That could very well, okay, Ravi Srivastava, I want to bring in Vijendra Gupta, but that could very well also be a reflection on the candidates that the Aam Aadmi Party has picked. You've picked weak candidates who could go either way, who are not sticking by the Aam Aadmi Party. It's also a reflection on the party. But I'll come back to you. I want to bring in Vijendra Gupta back into this conversation. Vijendra Gupta ji, बात तो ये भी है ना, क्योंकि ACB जो उन्होंने अरेस्ट किया है, वो तफ्तीश करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे. If the Anti-Corruption Bureau has anything on it, they'll prove it. वो लिंक निकल आएगा. And why is it? Question has been raised by Mr. Srivastava, and there is merit in that question. Why are those who gave that bribe not arrested? That's a little strange. देखिए, ये आर्गुमेंट से एक बात नहीं बनेगी. एमएलए इन्वॉल्व है, इलेक्टेड आदमी इन्वॉल्व है, आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स इन्वॉल्व है, वो पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं. कौन से ऑफिस बेरर पैसा दे रहे हैं और पर विजेंद्र गुप्ता जी, कौन से वो ऑफिस बेरर हैं और एमएलए हैं जो पैसा ले रहे हैं और दे रहे हैं और उनका एविडेंस बाहर आया है? बताइए. मैं देखिए इतना कहूंगा प्रीति जी, जो भी पैसा ले रहे, दे रहे हैं, कर रहे हैं, एमएलए इन्वॉल्व है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व है, आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स इन्वॉल्व है और वो पकड़े गए. सर, इनमें से ऑफिस बेरर कौन है? क्योंकि इनमें दोनों में से कोई ऑफिस बेरर नहीं है आम आदमी पार्टी का. मॉरल ग्राउंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पार्टी के लोग टिकट बेचने में इन्वॉल्व हैं. पर वही पूछ रही हूँ विजेंद्र गुप्ता जी, ये जो 2 अरेस्ट किए हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने, इन दोनों में से कोई भी ऑफिस बेरर नहीं है सर. देखिए, ये सिर्फ एस्केपिज्म है, ये एक डिफेंसिव, जो ये इसको मैं ये कहूंगा, ये सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक अलग तरह की, जो अभी मनीष सिसोदिया ने कहा, इतने कम में आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे, 90 लाख रुपया पकड़ा जाता है और आप 2 लाइन में बात को खत्म करते हैं और अपने एमएलए पर कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं. शर्म आनी चाहिए इनको. But Ravi Srivastava, the fact is, what is the message that has gone on? The brother-in-law, the personal assistant of an MLA, and which involves right now another MLA as well of the Aam Aadmi Party. It's not just one. There are 2 MLAs whose names have been cropped up. Is the Aam Aadmi Party, instead of being on the defensive mode, why aren't they open to at least investigating these charges? You've done it in Punjab, why not here? Just because then an election is in order? Absolutely not. Absolutely not. And Manish Sisodia has clearly said, let the probe be there. It's a fact that the people who are involved in the whole thing, none of them is the Aam Aadmi Party office bearer for that matter. And Mr. Gupta can make any allegation. It can be probed. The Anti-Corruption Bureau has arrested the people. But my question remains that why not the bribe giver being arrested till now? Who is that person? Why the she or he? Where is he hiding? They should also be arrested. You have paid the bribe, no? Bribe giver and the taker both are equal culprits. But what is happening in Gujarat, you watch it. That they are kidnapping people, abducting people on the gunpoint. And they are so afraid of Aam Aadmi Party, they have lost ground completely. विजेंद्र जी, ये बात तो सत्य है, क्योंकि चाहे किडनैपिंग ना हो, अब्डक्शन ना हो, पर कहाँ की पुलिस एस्कॉर्ट करती है किसी को अपना नामांकन
या नॉमिनेशन वापस लेने के लिए? गुजरात पुलिस ने किया है ये? देखिए, मैं कहूंगा ये नौटंकी है आम आदमी पार्टी की। उनकी गुजरात में कंफर्म जो है वो ये डिफीट जो है ये कंफर्म हो चुकी है। पूरी पार्टी जो है वो तो आप करते हैं हर जगह हो गई है। लोग पार्टी से छोड़कर भाग रहे हैं, टिकटें वापस कर रहे हैं। उसका ये बड़ा ही एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। और अब उसको फिर वहां भी नौटंकी करके उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाटक करना, नौटंकी gentlemen, I have run terribly out of time. I'm going to let it rest right here. But I am sure in the next few days to come, both the MCD elections back here in the national capital and the Gujarat elections, the political theatrics over that will only peak. Trust India Today to keep a keen eye on both developing stories.